नमस्कार आमे आज नुआ चैप्टर स्टार्ट करवा इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इरिगेशन सिस्टम जोटा कि आज आम कंटेंट रे कवर करवा इंट्रोडक्शन तार फीचर्स ऑफ माइक्रो इरिगेशन सिस्टम क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो इरिगेशन सिस्टम क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कंपोनेंट्स ऑफ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर थ्रू इमिटर्स स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम टाइप्स ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम माइक्रो स्प्रिंकलर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ माइक्रो इरिगेशन सिस्टम आज कभर जोटा भी आज आम कभर करूँ सेटा मेनली प्लस टू फर्स्ट ईयर वोकेशनल स्ट्रीम जो मैंने जॉइन कर न्यूली से एटा बहुत बेनिफिट हम तापर डिप्लोमा इन एग्रो पॉलिटेक्निक एग्रीकल्चर साइंस हॉर्टिकल्चर साइंस ता व्यतीत अन्य जी भी एग्रीकल्चर फील्ड रे इरिगेशन रिलेटेड रे माइक्रो इरिगेशन चैप्टर पढ़ो ताको एटा बहुत बेनिफिट हम आम जमती पूर्व पढ़ी सारी 9-10 रे व्हाट इज एग्रीकल्चर द आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग डोमेस्टिक एनिमल्स। हाँ आज माइक्रो इरिगेशन पढ़िया पूर्व इरिगेशन टी मन पकड़ा व्हाट इज इरिगेशन द साइंस ऑफ आर्टिफिशियल एप्लिकेशन ऑफ वाटर टू द लैंड in accordance with the crop water requirements throughout the crop period for full fledged nourishment of the crop। एटा सब पिला जानी सारी मन थी आज आम इंट्रोडक्शन कर। हाँ मुझे पढ़ाला बेले खाली मेन पॉइंट को टच कर चलजी जो मानकर दरकार से माने आर स्क्रीनशॉट नहीं नोट प्रिपरेशन करें। इंट्रोडक्शन माइक्रो इरिगेशन रेफर्स टू द लो प्रेशर इरिगेशन सिस्टम दैट स्प्रे मिस्ट स्प्रिंकलर और ड्रिप। Water is distributed using an extensive hydraulic pipe network that convey water for its source to the plant। Microirrigation mainly mist, sprinkler और drip आकार ही दिया था। तापर एटा divided into two types drip and sprinkler। drip जेटा हमें ओडिया रे पढ़थिलु कोन बुंदा जलसेचन स्प्रिंकलर टा छिंचा जलसेचन। फीचर्स ऑफ माइक्रो इरिगेशन सिस्टम फीचर्स सब गोटे पर गोटे पढ़ना। फास्ट अच्छी वाटर इज एप्लाइड विथ प्रेशराइज्ड पाइपिंग सिस्टम। सेकेंड रे वाटर इज एप्लाइड एट लो रेट टू द रूट जोन। थर्ड रे वाटर इज एप्लाइड ड्रॉप बाय ड्रॉप फॉर ए लॉन्ग पीरियड इन केस ऑफ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। जदि आम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यूज करूँ ताले बुंदा बुंदा करी बहुत कम परिमाण लॉन्ग पीरियड पर्यंत गछ मूले रूट जोन रे दे थाओ। Fourth point, water is applied at a frequent intervals as per the water requirement of plants। आम किसी समय व्यवधान रे जेमति कि गछ को पानी आवश्यकता अच्छी से हिसाब से पानी दे थाओ जहाँफल कौन हुए ना आमर पानी बहुत संचय होता है। नेक्स्ट पॉइंट वाटर इज एप्लाइड एट ए लो रेट टू मेंटेन द ऑप्टिमम एयर वाटर बैलेंस विद इन द रूट जोन। जमती आम एटा एयर व वाटर बैलेंस टाक मेंटेन कर ना कौन हम ना एयर फ्लोटा हेले वाटर ना कौन गछ रूट जोन रे प्लांट रूट जोन न पड़ी दूर रे पड़ जहाँफल आम वाटर लसेस हम। वाटर इज एप्लाइड डायरेक्टली टू द प्लांट एंड नॉट टू द अदर एरियाज ऑफ द फील्ड थस रिड्यूसिंग वेस्टेज। आम माइक्रो इरिगेशन सिस्टम यूज करिया फल कौन हुए प्लांटर ठीक प्लांटर गचर रूट जोन रे वाटर को आम दे था जहाँफल कि वेस्टेज ऑफ वाटर हो न थाए। आम जमी आम फ्लड इरिगेशन यूज करूँ से कौन पूरा फील्ड को आम पानी भिजेगा पड़ता जहाँफल गचर आवश्यकता पानी ठार अधिक पानी आमको नष्ट करा पड़ता ताफल गचर गछ भी क्षति पाला जमी गचर चेर पचिबार आशंका थिला अन्य तृण जातीय जमी वीड्स सब ग्रो करी गचर आवश्यकता न्यूट्रिएंट को एमाने नष्ट कर देते जहाँफल आम अमल यील्ड कम आसूला। नेक्स्ट पॉइंट द सॉइल मॉइस्चर कंटेंट इज ऑलवेज मेंटेन एट field capacity of the soil and hence the crop grows at a faster rate continuously at uniformity। तो classification of micro irrigation system classification हम पढ़ broadly classified into two types। first is drip irrigation system, next is sprinkler irrigation system। drip irrigation system drip irrigation is also called trickle irrigation। এটা बहुत टाइम रे क्वेश्चन आसे water irrigation also known as test irrigation is known as trickle irrigation मन रखियो एटा।
involves dripping water onto the soil at very low rate, 2 to 20 liters per hour। तो बहुत बुंदा बुंदा कर गछर मूल दि जाए। फॉर ए स्मॉल डायमीटर प्लास्टिक पाइप्स, ये देखुच चित्र अच्छी गोटे पाइप गोटे स्मॉल लगी बटम परिका, सेटा है स्मॉल डायमीटर गोटे लगी, स्मॉल डायमीटर प्लास्टिक पाइप गोटे लगी फिटेड विथ आउटलेट्स कॉल्ड इमिटर। सेटा कौन कह जाए? इमिटर्स और ड्रिपर्स। वाटर इज applied drop by drop or by microjet onto the soil surface or subsurface at the low rate, बहुत low amount of water को दिया जाए। स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन कौन हुए? स्प्रिंकलर इरिगेशन इज ए मेथड ऑफ अप्लाइंग वाटर इन द मैनर ऑफ सिमिलर टू रेन। जमी आम देखी वर्षा हेल्ले जमी पानी पड़े, पार्क में मेनली पे जाइए देखी गोटे स्प्रिंकलर इरिगेशन लगी था, जमी पानी छिट छिट वर्षा जमी गोटे दृश्य देखा जाए सेमती। एते तार द स्प्रिंकलर ब्रिक्स इनटू द वाटर इनटू ड्रॉपलेट साइज 0.5 to 4 mm। ओके, तार क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम मेनली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग। फर्स्ट रे सरफेस ड्रिप इरिगेशन, सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन, फैमिली ड्रिप इरिगेशन, ऑनलाइन ड्रिप इरिगेशन, इनलाइन ड्रिप इरिगेशन। सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन, सब सरफेस मान जमती आम बुझुचु सरफेस ऊपरी भाग में। इट इज यूज टू इरिगेट पेरेनियल क्रॉप्स, मेनली पेरेनियल क्रॉप्स एंड एनुअल क्रॉप्स या यूज करता सरफेस इरिगेशन। मन रखिथो सरफेस इरिगेशन इज यूज्ड मेनली पेरेनियल एंड एनुअल क्रॉप्स। पेरेनियल कौन? जो प्लांट दैट लिव्स मोर देन 2 years। एनुअल कौन? एनुअल crops है plant that germinates, produce seeds, flowers and die in 1 year। ताने लाइफ टाइम के एनुअल क्रॉप रो 1 year, आउ पेरेनियल क्रॉप रो मोर देन 2 year। सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन। सरफेस ड्रिप इरिगेशन कौन हुए? मेनली पाइपटा को बोरिड करा जाता है। इट इज ए मेथड ऑफ इरिगेशन इरिगेटिंग क्रॉप्स दैट प्यूरिड प्लास्टिक ट्यूब्स containing embedded emitters located at regular spacing। ए मेनली सॉइल सरफेस तले बिलो द सॉइल सरफेस तले गोटे पाइपलाइन को बिछाई थाए, जो थे कि किसी हल कराई थाए जमती से सॉइल सब सॉइल सरफेस रे रहिबो एवं गछर रूट जोन को डायरेक्टली जल जोगाण करि परिबो। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रिप इरिगेशन रे थर्ड पॉइंट आसु फैमिली ड्रिप। फैमिली रे जमती बुझुछु हम परिवार, एटा सेमती मेनली यूज करा जाए फैमिली किचन गार्डन रे देखिथिबो। एटा मेनली यूज करा जाए कि डेमोन्स्ट्रेशन गोटे माइक्रो इरिगेशन डेमोन्स्ट्रेशन करने फिल्ड को यूज करा जाए। ये यूज करा जाए कारण ये बहुत कम स्पेस नहीं थाए, 500 ରୁ 1000 मीटर स्क्वायर एरिया रे आम डेमोन्स्ट्रेट कर कि यूज कर। आस हम से डिटेल्स जान नवा। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेविटी फील्ड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। इट इज लो कॉस्ट सिस्टम डेवलप्ड फॉर स्मॉल फैमिली प्लॉट्स। इट इज सुइटेबल फॉर हाउस गार्डनिंग, जमी आम पढ़ते किचन गार्डन पर यूज हुए सेमती हाउस यूज हुए हाउस गार्डनिंग रे एंड पेरी अर्बन एग्रीकल्चर। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू डेमोन्स्ट्रेट द वर्किंग ऑफ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम केमती काम कर विषय में गोटे डेमोन्स्ट्रेट करने यूज कर। एंड मेनली कौन कौन कंपोनेंट्स यूज हुए? द मेन कंपोनेंट्स आर एलिवेटेड टैंक, स्टॉक ऑफ valves, फिल्टर, मेन लाइन, ड्रिप लाइन्स। नेक्स्ट रे कौन कौन थी आमर ऑनलाइन ड्रिप है। इन दिस सिस्टम इमिटर्स और ड्रिपर्स आर फिक्स एक्सटर्नाली, जमती आम चित्र देखु एक्सटर्नाली फिटिंग होता है इमिटर्स और कि ड्रिपर गुड़ा एक्सटर्नाली फिटिंग होता है ऑन द लेटरल एंड डिजाइन स्पेसिंग। दस द ड्रिपर्स कैन बी चेक्ड एंड क्लीन इजिली, जमती कि आम ड्रिपर्सटा को इजिली क्लीन कर। इन केस ऑफ क्लॉगिंग, क्लॉगिंग कौन ना जो किसी आमर अनावश्यक पदार्थ आसी जाम करदेव पानी ड्रिपर ड्रप ड्रप हो पानी गड़िया यूज सफा करने सब एक्सटर्नाली यूज होता है ड्रिपर्स टी। इट इज यूज इन ऑर्चार्ड, vineyards, artificial landscapes and nurseries। मेनली एटा नर्सरीज ऑर्चार्ड्स रे यूज होता है। लास्ट पॉइंट इनलैंड ड्रिप।
In this system, drippers are fixed in the lateral tubes and designed spacing at the time of manufacturing. तैयारी हेबा समय से पाइप रो किछि स्पेसिंग रे गोटे गोटे कोन थाए स्पेसिंग रे मैन्युफैक्चरिंग मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस क्रॉप्स ए मैन्युफैक्चर गोटे गोटे कोना थाए जोथरे कि गछरे यूज हुए कोन मेनली इनलाइन क्रॉप रे वेरी रो क्रॉप रे यूज हुए रो क्रॉप मेनली कोन कोन करछे कॉटन सुगर केन ग्राउंडनट एंड वेजिटेबल्स क्रॉप रे और फ्लावरिंग क्रॉप रे मध्य एटा यूज हुए लाइन ड्रिपटा ना तापर हम कंपोनेंट्स ऑफ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को पढ़िया इन मेन कंपोनेंट्स कौन कौन अच्छी पंप अच्छी फिल्टर अच्छी भाल्व्स अच्छी मेन लाइन सब मेन एंड इमिटर्स फिगरटा गोटे भलसे देखी था कंपोनेंट्स ऑफ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पंप पंप कनेक्ट वाटर सोर्स टू कनेक्ट होता है आउ लिफ्ट करे वाटर को लिफ्ट करे एंड सप्लाई टू द पाइपलाइन वाटर सोर्स मेनली कौन कौटे यूज हुए आम मेनली कौन यूज करूँ वाटर सोर्स मेनली आम यूज कर पॉन्ड रिवर रिजर्वियर कि ग्राउंड वाटर को यूज करूँ फिल्टर्स जमती आम घर घरे पानी पीवाई फिल्टर यूज करूँ फिल्टर कौन काम मेनली मेनली कौन से पानी को छाणी थाए ये सेमती कौन हुए ये फिल्टर्स प्रिवेंट क्लॉगिंग ऑफ पाइप्स ड्यू टू सॉल्ट and other tiny materials into the water. The filters include screen filter, sand filter, disk filter and hydraulic filter. Valves are used for various purposes. They include control valve, air release valve and non-return valve. The main line, submain and laterals carry water to the field. So pipe ro amaro pump ru connect hete pipe लाइन को पाइपलाइन कौन होते हैं मेन लाइन सब मेन एंड लेटरल कनेक्टेड होता है द लेटरल्स हैव द ड्रिपर्स और इमिटर्स थ्रू व्हिच वाटर अप्लाई टू द फील्ड पुणी लेटरल लो कौन कौन कनेक्ट होता है ड्रिपर और इमिटर कनेक्ट होता है अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन वाटर थ्रू इमिटर्स द्वारा हम कौन हुए फील्ड को वाटर डिस्ट्रीब्यूट हुए इमिटर्स और ड्रिपर कौन लगता है ड्रिप इरिगेशन यूज होता है distribution of water through emitters. Larger water application produce great spreading, but in both the horizontal and vertical direction. ये both horizontal and vertical direction में कौन हुए application होता है. Increased vertical spreading may be undesirable because water moving below the active root zone can result wasted water, loss of nutrients and groundwater pollution. सेमती किसी ना बढ़िया स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम इन स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम वाटर इज डिस्चार्ज अंडर प्रेशर इन द एयर थ्रू ए सेट ऑफ नोजल्स अटैच टू द नेटवर्क ऑफ एचडीपी फुल फॉर्म कौन हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन आर फुल फॉर्म मन रखिए पे बहुत समय पचार दिए एचडीपी हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन पाइप इट इज वाइडली यूज्ड फॉर सीरियल क्रॉप पल्सेस क्रॉप एंड स्पाइसेस एंड फील्ड क्रॉप्स स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज होता है टाइप्स ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम कौन कौन टाइप्स अच्छे फास्ट सेंटर पिवट टॉप पिवट रेन गन इंपैक्ट स्प्रिंकलर पॉपअप स्प्रिंकलर लिनियर मोब स्प्रिंकलर सेंटर पिवट ऊपर टिके हम डिस्कस करदे सेंटर पिवट कौन कौन से ये गोटे सिंगल स्प्रिंकलर लगी थाए लेटरली सपोर्टेड बाय टावर्स जमी चित्र देखुच गोटे ही यार स्प्रिंकलर थाए सपोर्टेड बाय टावर्स थाए and it is encoded at one end and rotates around the fixed central point. It's called pivot point. Fixed point today encode होता है तो कौन कहते हैं pivot point. Types of sprinkler irrigation the next row is towel pivot. It is same type of it is same as center pivot. Only one difference था towel pivot is similar to center pivot but here the pivot is torted away by a tractor ये गोटे ट्रैक्टर द्वारा ड्रोन होता है there are 3 to 4 wheels in the center of the pivot which make it possible to move pivot from one place to another by pulling it is with the help of tractor कहाँ से देते हैं ट्रैक्टर सहित यहाँ को कनेक्ट कराता है यार 3 ରୁ 4 चक्र व्हील लगता है जहाँफल कि गोटे जगार अन्य जगह नापी आमको सुविधा होता है नेक्स्ट अच्छी रेन गन A rain gun is used as a water spray mist or fog beam. ये बहुत क्षुद्र जल कण स्प्रे होता है. It is discharge water at less than 175 liter per hour.
केते गोटे घंटार 175 लिटर वाटर स्प्रे होता है. इट इज यूज टू इरिगेट ट्रीज एंड अदर क्रॉप्स सेपरेटेड वाइडली. एठरे कौन कौन होता है एठरे ट्री और सेपरेट जो बसी बसी उषार पटाड़ी रे जो क्रॉप लगा है छोटा छोटा हिसाब से वाइड स्प्रेड थाए सेपरेट थाए सेठी हमें रेनगन को यूज करूँ. तापर इम्पैक्ट स्प्रिंकलर এটা কোন the sprinkler is driven by a circular motion by the force of outgoing water. জল ভিতরে পানিটা ବାହାରକୁ ବାହାରିଥାଏ ସେତେବେଳେ এটা circular motion ରେ ଘୋରେ. କେମିତି ଘୋରେ? and let one of its arms extend to from the head. ଗୋଟେ ପାଣି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାଜିଲା ପରେ ହେଡ୍ରେ ତାର ଗୋଟେ ଆର୍ମ ଅଛି ସେଟା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଥାଏ. the sprinkler arm is repeatedly pushed back into the water stream by spring. ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ में ଲାଗିଥାଏ. when the arm strikes the water stream, it scatters the stream and reorients the flow, enabling a uniform watering around the sprinkler. ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ତାର ପାଣିର ଫୋର୍ସରେ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ତାର ହେଡ୍ ପାଖରେ ଆଉଟଗୋଇଂ ୱାଟର ଗୋଟେ ଫୋର୍ସରେ ସାର୍କୁଲାର ମୋସନରେ ଫୋର୍ସରେ आउटगोइंग वाटर जो बाहर आउटगोइंग वाटरटा वन ऑफ इट्स आर्म रे बाजी थाए से आर्मटा कौन हुए एपट सेपट राउंड आकार फुल थाए जो गोटे स्प्रिंग लगी था जहाँफल कि स्प्रिंकलर आर्मटा रिपीटेडली पुश्ड बैक हुए टू वाटर आर्म बाय स्प्रिंग. व्हेन द आर्म स्ट्राइक्स द वाटर स्ट्रीम जो से आर्मटा तार बाजी जाए वाटर स्ट्रीमटा बाजी जाए से कौन हुए इट स्कैटर्ड एटा वाटरटा को स्कैटर्ड कर दिए और सब विचूरित कर दिए स्ट्रीम एंड रिओरिएंट द फ्लो एंड फ्लोटा जो वन साइड होता है से बाजला पर रिओरिएंट ताको आउट डायरेक्शन को फ्लोटा बुलाई दिए जहाँफल कि देखी तुम स्प्रिंकलर रे पूरा घूरू थाए पूरा 360 डिग्री स्प्रिंग होता है. तापर टाइप्स ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम. नेक्स्ट कौन रहा पॉपअप स्प्रिंकलर. पॉपअप स्प्रिंकलर आर डिजाइन टू कवर रिलेटिवली स्मॉल एरियाज विथ स्प्रे ready between 3 and 15 feet and an operating pressure between 15 and 30 psi. psi कौन पाउंड पर स्क्वायर इंच. एथरे केते ऑपरेटिंग प्रेशर लगे 15 and 13 प्रेशर रे psi. टाइप्स ऑफ स्प्रिंकलर लिनियर मूव स्प्रिंकलर लास्ट रही. लिनियर मूव स्प्रिंकलर इरिगेशन system is similar to the center pivot system in construction except that neither end of the lateral pipe is fixed. आर लास्ट lateral pipe टा कोथरे भी फिक्स नता है नहले सेम एज टू pivot system. हाँ अब नेक्स्ट पढ़िया आमे माइक्रो स्प्रिंकलर्स. माइक्रो स्प्रिंकलर कौन? माइक्रो स्प्रिंकलर्स commonly known as emitters, sprinklers or spray heads, operates by spreading water through the air. जोटा कि हमको पानी को स्प्रेड करने जो हेल्प करे कौन कौन इमिटर स्प्रिंकलर और स्प्रे हेड. डिपेंडिंग ऑन द वाटर थ्रो पैटर्न्स माइक्रो स्प्रिंकलर्स आर रेफर्ड टू एज मिनी स्प्रेज माइक्रो स्प्रेज जेट्स और स्पिनर्स. स्टार्ट करें माइक्रो स्प्रिंकलर. माइक्रो स्प्रिंकलर सिस्टम रिक्वायर्स लेस एनर्जी and generally operated at a pressure range 1 to 3 kg per centimeter square and a discharge of 40 to 75 liter per hour. आज लास्ट कौन पड़ेगा बेनिफिट्स ऑफ माइक्रो इरिगेशन सिस्टम. फर्स्ट कौन बेनिफिट हुए वाटर सेविंग हुए. वाटर केमती सेविंग हुए वाटर रिक्वायरमेंट इन ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन इज मच लेस एज कंपेयर टू एनी अदर कन्वेंशनल मेथड ऑफ इरिगेशन. जमती आम कन्वेंशनल मेथड कौन यूज करूँ एमती आम नॉर्मली फील्ड कौन गोटे पानी नाल द्वारा आणु फील्ड को छाड़ दो जहाँफल कौन है पूरा पानीटा फील्ड रे कभर हो जाए जहाँफल आम बहुत अधिक समय भी नष्ट हुए पानी भी नष्ट हुए जहाँफल फील्ड वीड्स ग्रो करे आमर इल्ड क्रॉप इल्डा को कमे दिए. फास्ट पॉइंट कौन वाटर सेविंग. नेक्स्ट यूनिफॉर्मिटी इन वाटर एप्लिकेशन. माइक्रो स्प्रिंकलर सिस्टम एंश्योर यूनिफॉर्म वाटर एप्लिकेशन एज कंपेयर टू द सरफेस इरिगेशन मेथड. सरफेस इरिगेशन मेथड कौन हुए ना कौटे फील्ड ऊंचा कि खालुआ था से कौन ऊंचा जगह को पानी पहुँचे खालुआ जगह को बेसी पानी चल जाए यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हुए ना किंतु माइक्रो इरिगेशन यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हुए. नेक्स्ट वर्ड एनर्जी सेविंग. माइक्रो इरिगेशन सिस्टम
requires less electricity as compared to other system. other system रे हम पूरा field को भिजेइ पड़े तेणु अधिक electricity दरकार एथिरे किंतु full field को भिजेइ दरकार नहीं केवल root zone को भिजेइबार अछि तो हमको कम एनर्जी खर्च करिया को पड़े. Improved chemical application. Micro irrigation system can apply chemicals to the plant through fertigation unit. Fertigation कौन? Fertigation is the application of fertilizer with irrigation to the field. हाँ इतना में इम्प्रूव कौन हुए केमती इम्प्रूव हुए. Fertigation is the application of fertilizer used for making soil amendments in order to improve plant growth. Since the fertilizer are applied directly to the root zone. एटा हम fertilizer को पूरा फील्ड सारा आमको पकेवा पड़े ना जहाँफल कि फील्ड सारा पकेले कौन हो अधिकांश जल नष्ट हम आम गछ मूल ठीक पहुँच पारे जहाँफल उइड ग्रोथ कर जो जो मैन्योर आमर गछ दरकार आम कौन उइड खर्च करूँ जो उइड पड़ो पुणी उइड सफा करने आमको अलग इंस्ट्रूमेंट दरकार लेबर दरकार तो आमको कौन डायरेक्टली कौन हुए फर्टिलाइजर अप्लाइड डायरेक्टली टू द रूट जोन of the plants. A reduction in the total amount of fertilizer applied is possible. Next one, weed and disease reduction way. Weeds are the unwanted plants that grow in lawns, gardens and agriculture fields. They compete with the plants for nutrient, moisture and sunlight, which can reduce the crop quality and yield. Weed growth is inhibited as only a limited area gets irrigated. এটা যেমন আমরা পূর্ব ডিসকাশন করছি উইড বিষয়ে সেম. Improve tolerance of crops to soil salinity. Micro irrigation reduces the sensitivity of most crops to saline water or soil water condition due to high moisture content in the root zone of plants. Suitability to various topography and soil type. Micro irrigation system can function efficiently on any topography if appropriately designed and managed. Suitable to various topography and soil type. विभिन्न प्रकार सॉइल टाइप कि टोपोग्राफी को इमे यूज करि परियो. रेगुलेट्स वाटर थ्रू ऑटोमेशन. माइक्रो इरिगेशन सिस्टम यूज ऑटोमेशन कंट्रोल व्हिच कैन बी सिंपल मैकेनिकल क्लॉक्स और टाइम्स दैट ओपन और क्लोज द वाल्व प्रीसेट टाइम जेमते हम अलार्म लगो जति समय हमर उठिबार अछि सेमते थोड़े टाइम सेट कर दे जे कि सेति समय एटा फील्ड में नथिले भी से फील्ड रे चालू होई कि सेति समय पर्यंत हम थोड़ा 10 मिनिट कि 15 मिनिट पानी दरकार ए समय दरकार तो एटा गोटे ऑटोमेशन लगी था जोटा कि भाल्व गुड़ को ओपन आउ क्लोज कर हेल्प करे जहाँफल आमको जगवा को पड़ेनि. रिड्यूस लेबर कॉस्ट. लेबर रिक्वायरमेंट्स इज रिड्यूस एज इट्स एन ऑटोमेटेड सिस्टम एंड डज नॉट रिक्वायर मेनी लेबर्स टू इरिगेट एन एरिया. एंता पूर्व जानलु ये ऑटोमेटिक सिस्टम लगी तो बेसी लेबर कॉस्ट आम लगे. इम्प्रूव्स क्वालिटी एंड यील्ड. Last point, improves quality and yield. Crop quality and yield is improved under micro irrigation system because of slow, regular and uniform application of water and nutrients. Besides, damage and losses due to the contact of water with fruit or foliage are practically eliminated. जेन तुम जानते हो बैगन को बिलाती गछ लगे था कि आलू बाड़ी देखी तो पानी देला पर किसी बिलाती पची जाए किसी आलू बोध पची जाए अधिक कारण कौन है लैंड लेवलिंगटा सेम होता है आम गचर मूल जी आवश्यकता पानी आम कौन अधिक पानी दे था सरफेस इरिगेशन जहाँफल कौन हुए पानी ड्रेन आउट हो पारे जहाँफल फ्रुट नमन नष्ट हो जाए. ओके आज समरी कौन था इन दिस सेशन वी हैव लर्नड अबाउट द मेन फीचर्स ऑफ माइक्रो इरिगेशन सिस्टम क्लासिफिकेशन माइक्रो इरिगेशन सिस्टम एंड कंपोनेंट्स स्प्रिंकलर सिस्टम ना एंड बेनिफिट्स ऑफ माइक्रो इरिगेशन सिस्टम. Thank you.